माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मांगों पर आप जवाब मत देना। मांगों के लिए जिन जिन माननीय सदस्यों ने आपने मांग की उनको आप चेंबर में बुलाना और लिखित में जवाब दे देना। अभी आप विधेयक पर जो बोले हैं उनका जवाब देना उचित रहेगा। Sir, I'm deeply grateful to you, and I will try to the extent possible to follow your injunction, sir, your instruction. But there are some very interesting things which have been said. If they don't go on the record, a letter that I write to the honorable members later may not reflect the thing, because there are some. So if you please, I seek your indulgence, sir, and I will try to be as quick as possible, but some of the points need a response. The first honorable member who spoke, Shri K. Jayakumar, he said that there was no mathematical basis to explain why the figure of 1.5 million, which was in the 2008 legislation, why that was being replaced by 3.5 million. And another honorable member turned around and said, why not 2.5 million? Well, the answer is quite simple. And as I tried to explain, that 1.5 million represented 1.3% of the passenger throughput at that point of time, which was 117 million. And the figure of 3.5 million similarly represents 1.7% of the million passengers per annum throughput of 345 million, which is the passenger throughput now. So there is an explanation. He also said that adequate attention should be paid to the smaller airports. And I entirely agree, and for that reason, my distinguished predecessors in this job and all the others concerned ensured that rupees 10,000 crore is being spent on development of minor airports in the Tier 2 and Tier 3 cities in the next 4 years. In fact, today, the Ministry of Civil Aviation is deciding and approving the tariffs of all minor airports. And I want to assure the honorable member that performance standards will not be compromised. These standards will continue to be monitored by AERA, and standards to be maintained will also be part of the bid document for future things where they were included in that route. I would also now like to come to what Supriya ji said. She said, first of all, I thank her for recalling that governance is continuity. But I still have to answer the point that has been made, because she made an important point. The point, sir, is, and I'm very grateful to Rudy ji for reminding us of all the important decisions that were taken in Vajpayee ji's government. I must confess, I was a junior joint secretary at that point of time in the government. And the issue is, not only is this program of privatization ultimately traceable to that period, but many of the other things we did for urban transport, metro for instance, it was started in 2002. Today we have 600 kilometers of metro operational, another 600 kilometers of metro which is under construction. I come now to the question about whether there is a conflict of interest. This is a point which was made between the Airport Authority of India as an operator and regulator. This point is not correct. It is not correct because the central government is the regulator in this, and minor airports will all continue after the amendment to be so controlled. I now come to what Rudy ji, I'm glad, an honorable member, I think it was Shri Dhanesh Ali, who said कि आपने Rudy ji को भी बोलने का मौका नहीं दिया. I don't know what this definition, 30 मिनट तो Rudy ji बोले, उससे हम सबको ज्ञान मिला और इतनी चीज़ें, और उन्होंने कुछ ये भी सजेस्ट किया कि शायद अगर आप इनको थोड़ा समय और देते तो कई ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें वो कह पाते. पर मैं इन्होंने जो चीज़ें कही है उनके बारे में आई वांट टू रिस्पॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोपोली की बात की, ये 6 एयरपोर्ट्स की, पर मैं अभी थोड़ा वापस जाना चाहता हूँ. जब 2006 में 2 एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन हुई, those 2 airports, Delhi and Mumbai, account, sir, for 34% of the total air traffic of 435 million. So these 2 airports. और जहां तक ये 6 एयरपोर्ट, इनकी अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, ये 6 एयरपोर्ट मिला के सिर्फ 6% बनती है, 6% only. And out of that, in fact, apart from Mangalore, the other 5 will be controlled by AERA and regulated by AERA. So there is a lot of misinformation which is being generated. I think some of it due to genuine
lack of understanding of what this bill says. पर सर ये बहुत बढ़िया मौका होता है इस बिल पे जब चर्चा होती है तो माननीय सदस्य जो हैं इनको और चीज़ों पे भी बात करनी होती है कि अगर बागडोगरा से फ्लाइट हो या आगरा से, और मैं बहुत खुश हूँ उन स्पेसिफिक्स पे मैं इनको बाद में जवाब दूंगा। पर मैं रूडी जी को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम के द्वारा कि सेफगार्ड्स ऑलरेडी इस आरएफपी में, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ऑलरेडी बिल्ट इन है कि मोनोपोली स्थिति ना हो। तो ये मैं इनको बिल्कुल, आई वांट टू गिव यू अ टोटल अश्योरेंस सर थ्रू यू। ये जो 6 एयरपोर्ट्स जिस पे चर्चा हो रही है और कुछ लोग थोड़े से एक्साइट हो रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा इसमें से 5 एयरपोर्ट्स आर ऑलरेडी मेजर एयरपोर्ट्स फॉर विच द टैरिफ्स हैव ऑलरेडी बीन डिटरमिन्ड बाय एरा। तो इसमें कोई something unforeseen happening is not correct. So it's only one of those airports which is beyond the thing. You could just withdraw this sentence. Genuine lack of understanding. No, I am saying myself that, no, not in your case. You have more understanding than all of us. Sentence came, so we were all. No, I can, let me rephrase it. There may be some miscommunication on account of perhaps the narrative, because the narrative outside is that the government is embarked on a major plan of privatization. It is intended to benefit one party. Sir, I want to utilize this opportunity to say 2 of those airports which were privatized in the year of 2000, they account for 34%. Now a lot has been said about what is happening to those 2 airports. Sir, in 2005-06, prior to the privatization of the Delhi and Mumbai airports, the share that Airports Authority of India derived from the revenue of those airports was 669.94 crores. 661.994 crores. This year, because of the decision which was taken in 2006 or 7 or 8, today the revenue is 1,591.25 crores. It is more than 2.5 times. That is what has happened. और रूडी जी ने भी ये कहा कि एक अच्छे डिसीजन से और कई फायदे हुए हैं। अच्छा, मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बताता हूं। 2005 और 6 में अध्यक्ष महोदय 665.47 crores was the Airports Authority's revenue. That has gone up to 1,438.0. In other words, इसमें भी डबल से ज्यादा फायदा हुआ है। सर, एक चीज बिल्कुल सही है कि the scale at which the expansion has taken place. 117 million passengers per annum थे 2008 में। इस समय 440 million passengers per annum हैं, और जिस रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं 17% per annum, we could be looking at a figure of something like, रूडी जी ने बताया 620 जहाज. This would be looking at, with the kind of orders which are being placed by some of the private carriers, which is in the hundreds, we could be looking at 2,000 aircraft in a very short period of time, and a passenger throughput of nearly 1 billion passengers within a few years. I'm not a soothsayer, sir, I don't know, but if I look at this fact that is 7% penetration and a 17% rate of growth, it is a phenomenal opportunity. We are today the 3rd largest, but we could end up growing even further than that. Now I come to certain questions which have been asked. Patna Airport, for instance, a specific question, and I can say that the present airport expansion for a passenger traffic of 8 million passengers per annum at a cost of rupees 1,200 crores is in progress. और जो बियटा की स्कीम है, been approved for joint use of airport with the Indian Air Force for 10 million passenger capacity. This year, इसमें 850 करोड़ खर्च किया जा रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार जिन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन देनी है, वो जैसे ही ज़मीन मिलेगी उसको, उस मुद्दे को आगे, उस प्रोजेक्ट को आगे हम बढ़ा पाएंगे. श्री बल्ली डीपी राव ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि इससे एरा की पावर्स डिमिनिश होने वाली हैं, और ये पॉलिसी इशू है. मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा
that the ERA powers will remain the same, except that the ERA will concentrate on those airports which have this 3.5 million capacity, और हर एक एयरपोर्ट जिसको ERA रेगुलेट करता है वो टैरिफ वहाँ पे 5 साल की जो पीरियड होता है एक बार करते हैं. और हमारा जो एक्सपीरियंस हो रहा है that we are better served if ERA concentrates and focuses on larger issues rather than be confronted with too many other situations, because then there is a dispersal of focus. But Ministry of Civil Aviation will continue to perform that role. Tirupati is a declared international airport. I want to inform the honorable member, and it has all the facilities. Why are international airlines not operating, sir? I should have made that point as a submission through you to the honorable members right in the beginning. Problem ye hai that decisions on who wants to operate, these are commercial decisions taken by the individual carriers, and I want to place on record that even insofar as Air India is concerned, an honorable member was getting very upset ki ye ho gaya, wo ho gaya, Air India should be instructed. It is precisely this mindset where governments have sought to instruct Air India that Air India has now got a debt which is almost completely unsustainable. We are incurring a loss of 20 crores of rupees a day, and the government is committed in the interest of overall rationalization to privatize Air India, and an alternate mechanism has been formed, and we propose to push this through very early. Fares की बात हो रही है सर. सर मैं आपके माध्यम द्वारा माननीय सदस्यों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, overall fares are coming down, they are not increasing. Narudi ji ने कहा, और मैं I am grateful to him for not only for that, for many other things he said. But let us be clear as to how this is done. And now, let us not go into specific cases. If there is no facility somewhere, the airlines, we deregulated. Now all the airline has to do is to provide on its website information about the range of fares. कि मान लीजिए दिल्ली मुंबई का रूट है और फेयर शुरू होगा अगर 5,000 से, तो शायद वो जाएगा 20-30 हज़ार से. अगर कोई एपेक्स सिस्टम में बुकिंग करता है 60 दिन के नोटिस के द्वारा, वो 5,000 पे जाता है. पर मैंने वेटेड एवरेज देखा है फेयर्स का, और मैं रूडी जी को भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम के द्वारा, 2001 में, 2011 में, 2019 में the fare weighted for Delhi, Mumbai and several other trunk routes was exactly the same, 5,100 rupees. Sir, when we enter into a policy discussion like this, sir, I have a little experience in another ministry where I've been minister for 2 years. जब वहाँ पे मैं स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि हमने 65 लाख टॉयलेट बना दिए, इतने शहर ODF हो गए, तो कभी कभी ऐसी बात जो मेरे मित्रों और माननीय सदस्य कह रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ फेयर सब जगह कम हो रहे हैं या स्टेबल हुए हैं, वो कहते हैं एक्सेप्ट गया. हो सकता है, पर दिस इज लाइक द आर्ग्यूमेंट इन द स्वच्छता सर्वे, व्हेन आई से ODF हो गया है, वो कहे मेरे घर के बाद तो गंद पड़ा है. सो माय सबमिशन सर इज we can deal with an ecosystem, and one of the efforts we are making is to encourage airlines. Now, why do airlines not make profits? And this is not an Indian phenomena, sir, this is a worldwide phenomenon. If you look at the American civil aviation market, Pan American, TWA, many airlines have gone into loss and closed down. Swiss Air used to be a carrier, flagship carrier of Switzerland. It has been taken over by Lufthansa. Why? There are several institutional constraints. The cost of aviation tech, ATF, there are other issues. और रूडी जी ने याद करवाया कि वाजपेयी जी की सरकार में कम किया था. मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं निर्मला जी से ये कहूँ कि ATF को पेट्रोल और डीजल से डीलिंग कर दिया जाए, so that the airlines receive a thing. At the end of the day, sir, airlines will be able to operate. और हाँ, यहाँ जो growth हो रही है, it's phenomenal. But they will be able to operate only if they are able to make some money. Otherwise, the number of aircraft which are companies which are losing money is very much on the high. Cargo, sir, ERA already determines the cargo tariff charges. ये राहुल शेवाले जी ने पूछा है, इनको बताना चाहूँगा. नवनीत राणा जी को मैं ये बताना चाहूँगा that RFP में, request for proposal में, we have absolutely clarified that no employee will be declared surplus or redundant
as a result of any privatization program. In fact, the entity which is winning the bid has to take those employees over. And our experience has been that when you have trained employees, it is in the interest of the person who is going to run the entity to want to take those employees. But insofar as airline staff are concerned, the bill does not deal with that. This is a bill to deal with the Airports Authority, which is the running of the airport and the commercial operations of the airport. Sector Amravati to Mumbai, मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए अध्यक्ष महोदय कि अलायंस एयर इस फ्लाइट को ऑपरेट करेगा आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के द्वारा। नहीं, वो मिल लेंगे तो आप चाह रहे हैं कि मैं जल्दी समाप्त करूं। मैं तो बहुत खुश हूं, पर मैं बाद में जाके मैं ये नहीं सुनना चाहता कि जी हमने इतने कठिन सवाल पूछे तो मंत्री जी से तो जवाब नहीं बोला, तो मंत्री जी आज रिकॉर्ड पे कहना चाहेंगे। अच्छा, सर वो नहीं, एक मैं आपके सिर्फ मैं दानिश अली जी को जरा थोड़ा जवाब दे दूं, बिकॉज इन्होंने अच्छा वो थोड़े मुझसे नाराज लग रहे थे, कोई वो कागज मुझे देना चाह रहे थे, और मैं यहाँ इस प्रोफेशन में आने से पहले अध्यक्ष महोदय एक दूसरे प्रोफेशन में था जिसको फॉर वांट ऑफ अ बेटर टर्म डिप्लोमेसी कहते हैं। वहाँ पे मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी, कोई आके आपको कोई कागज़ पकड़ा ले तो ध्यान से पहले देख लेना वो कागज़ क्या है। अगर ये मुझे कागज़ दे रहे थे जो कि कोई एम्प्लॉयज़ ने मुझे चिट्ठी लिखी है, तो मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगा उन एम्प्लॉयज़ की चिट्ठी मुझे डायरेक्ट आनी चाहिए, वो किसी और के द्वारा नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं तो अभी ये भी कहूँगा मुझे वो चिट्ठी मिली नहीं है, पर मेरे जो सांसद क्यों अपनी चिट्ठी देगा, दूसरे की चिट्ठी क्यों? हाँ दूसरी, हाँ एग्जैक्टली, अरे आप नहीं मेरे को नहीं मिली। अच्छा नहीं, आप ऐसे करिए, आप दूसरे की चिट्ठी, आप माननीय सदस्य हैं, आप पोस्ट ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि मुझे चिट्ठी नहीं मिली है, और जब मेरे को चिट्ठी मिलेगी मैं सिर्फ चिट्ठी का जवाब नहीं दूंगा, उनसे बात भी करूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हमने तो आपके सारा सेफगार्ड कर लिया है। हाथी के माध्यम से, सर हाथी के माध्यम से चिट्ठी आएगी तो 2 महीने लग ही जाएंगे। अच्छा, दूसरा आपको दूसरी चीज बनाना चाहूंगा कि ये जो 2 एयरपोर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि वो जो 2 प्राइवेटाइजेशन हुई थी, पर वो जो 2 प्राइवेटाइजेशन हुई थी उसके बाद 9 और ऐसे अटेम्प्ट्स हुए, एंड इन ऑल दोज 9 अटेम्प्ट्स a stipulation was included that you required previous airport running experience, which meant, sir, that those 2 companies were winning all the bids. When we removed that, for these 6 airports, which will only comprise 6% of the traffic, we got 32 bids. And those 32 bids are so competitive, they are global bids, that 31 of them we are getting, if we were getting offers here, we are getting them much higher. In fact, these 2 companies which run them earlier, the bids we have received are much more. And now the final point which I want to tell the honorable member, for these 6 bids, if and when they go through, the operator will pay 2,300 crores upfront to the Airports Authority. And it is this kind of earning by the Airports Authority which enables us to run the regional connectivity scheme, UDAN, and which makes it possible for us to run other things. Because these are all demand-driven. I see a lot of demand for a quick this thing, but I have the last 2 points. Delhi Airport, 247 acres. A suggestion was made कि कई लोगों को अपने दोस्तों को जमीन दे दी, कुछ और हो गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सिर्फ 5% टोटल लैंड उन्होंने अभी दिया है फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, एंड टिल डेट ओनली 2 acres has been so developed for commercial lines. हाँ वही दिया है, तो उतना ही दिया है, उतना ही, पर उसमें बोला सारा, उन्होंने बोला था 2,500 एकड़ दे दिया है, ये कहा उन्होंने 2,500 एकड़ था वही। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, उसका डिसीजन लिया था जो सरकार थी 2008 में,
जांच मैं कराऊंगा अध्यक्ष महोदय, शायद वो भी हम करवा पाएं। पर आखिरी पॉइंट जो मैं बीहता एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा, ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैज बीन एंगेज्ड and work is to be awarded by March 2020 and the completion period for 30 months. This will be a project costing 850 crores. This was a specific question that was answered. I have several other points, sir. I think those are specific to particular airports, but I want to take this opportunity, sir. The development of Kota Airport and the operation of services for Kota is just now the highest priority, because several members have requested me to ensure that we accord it priority. I thank you very much, sir. आगरा का ये दिख लीजिए बजाय अच्छा सर, मैं अब सर अभी अच्छा सर सर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है सर। आई रिक्वेस्ट यू, मैं कर देना। आगरा वाराणसी, आगरा बेंगलोर, आगरा भोपाल, आगरा लखनऊ, इंडिगो टू स्टार्ट ऑपरेशंस बाय दिसंबर। मुझे बोलने दो यार। आगरा दिल्ली स्पाइस जेट, Agra Jaipur Alliance Air, this was started in 2017. Agra Mumbai allocated to Jet Airways, now rebidding. In all these, I want to assure members that after I have become minister, which is only a few weeks ago, it is my constant endeavor. Yesterday I had a meeting with the honorable members from Kerala, and they all had very simple demands that each one, there are already 4 international airports there, clearly they are not enough. Then I had to tweet a figure that Kerala is perhaps the best connected state in India, but it will be our endeavor under Modi ji's government's inspirational leadership that we will provide all the services, but we can only use a margin of persuasion, and I will certainly do my best. Thank you very much, sir. माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं कि जिस तरीके से इस सरकार से लोगों की अपेक्षा आकांक्षा है, आप सब अपने अपने इलाके में एयरपोर्ट और हवाई सेवाएं शुरू करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, आप सबको व्यक्ति से बुलाकर एक एक माननीय सदस्य से चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से जो सवाल आपने सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछा है, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को आप बुलाकर उनको निश्चित रूप से। Sir, I now move that sir, I want to thank the honorable members. It must be the electric atmosphere you have created, sir, as the presiding officer, and the importance of the subject, because I look at the lateness of the hour, and I think if we go into some more points, we could be here for several hours. But I'm deeply grateful, sir, for the interest shown, and I want to assure each member through you that my doors are open. I will sit down with you. Not only will I discuss what your requirements are, but I will also, where I think I need your help, we will try and persuade the airline companies to institute those flights. I now move that, sir, that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। माननीय सदस्यगण, सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। चूंकि जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर संशोधन की सूचना दी है, वह सदन में अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं खंड 2 और 3 को एक साथ सभा के लिए निर्णय के लिए रखूंगा। आपको माननीय मंत्री जी ने कह दिया, आपको बुलाएंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम और सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि राज्यसभा द्वारा यथा पारित विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I now rise to move that the bill as passed by the Rajya Sabha be passed. माननीय सदस्य एक थर्ड डिग्री में इनका जवाब दे दो। क्या बता रहे हैं आप, बताएं। थैंक यू सो मच सर, आपके वजह से हमको बहुत अच्छी तरह से मौका मिल रहा है बोलने का। सर कुछ देर पहले जी प्लीज, सुबह से बैठ रहे हैं, थोड़ा क्लैरिफिकेशन अगर मांग रहे हैं तो बोलने दीजिए। सर प्लीज, व्हाई दे आर डिस्टर्बिंग इन बिटवीन सर? यू आर सीनियर मेंबर, यू शुड नॉट डू दिस। सर कुछ समय पहले मैं सर सुबह से बैठा हूं इस बिल पे बोलने के लिए, और मैंने जितने भी अपने क्वेरीज रखे थे, कोई एक चीज का भी जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं रखा। सर मुझे बड़ी दुख है सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं। सर मैं बहुत जूनियर हूं, मेरा नाम अनुभव महांती है, ओडिशा से हूं सर, बीजू जनता दल से हूं, ओडिशा को रिप्रेजेंट करता हूं, एक भारतीय नागरिक हूं सर। मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से जो आपसे पूछा सर, आई हैव ऑल 6 pages and so many queries on my I have no, it's not that. Please, I seek your understanding. I have आप written a माननीय detailed- मंत्री जी एक क्लेरिफिकेशन पूछ लो। मंत्री जी तो सक्षम है सबका जवाब दे देंगे, आप नहीं पूछें। सर, आप मैं बताना चाहूंगा। I have written a detailed letter to the Honorable Chief Minister, Shri Naveen Patnaik ji, and I have mentioned what all we have been doing and what we can do. We have in fact recommended that Dubai Emirates has 11 points of call in India. We have some difficulty in increasing those as part of the bilateral agreements, but we are in discussion with several of our private carriers to encourage them to mount a flight from Bhubaneswar to Dubai. I've also written to the Honorable Chief Minister on that. So I thought because I have taken action, there are several other points because of the lateness of the hour I have not been able to. Please feel free to come and see me. Tomorrow I'm in a party meeting, or on Monday. I'd be very happy to share with you all the efforts that we make. थैंक यू। आप भी दानिश अली जी पूछ लो। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि 2006 में इतना मुनाफा था दिल्ली एयरपोर्ट का, 2018 में बढ़कर के 3 गुना हो गया। मंत्री जी तब से अब तक पैसेंजर कितने गुना बढ़े ये भी आपको पता होगा। क्लैरिफिकेशन सिर्फ इतना है कि 94th पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है हेडेड बाय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, आप ये दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में, उस पर क्या आप कार्रवाई करने का एश्योरेंस देंगे? बस। Several questions. He referred to somebody in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, having said something about putting a cap. Now, I thought it is not necessary for me to correct the Honorable... No, you asked other question. Let me answer this. Let us be very clear that the Secretary Economic Affairs took a position. Then he mentioned Niti Aayog. It was the Chief Executive Officer of Niti Aayog who headed the committee, empowered group of secretaries which took those decisions. Insofar as taking action on some report of 194 of the 94th report, I can look at it, but I'm not familiar with the report. This is a discussion today on a particular piece of legislation, Airport Economic Regulatory Authority Act, and I don't think it is appropriate or necessary for me to say, I have a problem in my district headquarters, when are you starting the flight? I'm doing this as a matter of courtesy and in a spirit of cooperation. But this digresses from that. The honorable member is welcome to come and tell me. I will be happy to talk to यही him. जवाब देना था। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 5 अगस्त 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।